हेलो गाइस, यहाँ पे तैयब है और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज विंडोज़ 10 11 की जो खुद से बिल्ड की है मैंने। और ये बहुत अच्छी है। अब अगर आप एंटीवायरस को ऑफ करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप ऑन करके इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विंडो डिफेंडर ऑफ करके या फिर नेक्स्ट करूँगा। और ये बहुत ही अच्छी है, स्पेशली पबजी और फ्री फायर गेमर जो लोग एमुलेटर पे खेलते हैं। स्पेशल डिज़ाइन फॉर एमुलेटर प्लेयर्स एंड अदर गेमिंग। और इसमें किसी किस्म का लैग वगैरह नहीं है, तो बग फ्री नहीं है। तो जस्ट आप लोग डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जब एक इंस्टॉल हो रही है तब तक हम यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे स्किप थोड़ा सा। यहाँ पे हमारी टाइनी 11 जो है ना वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। जस्ट जस्ट मिनट आए। और ये बहुत सारी चीज़ें स्किप देखो कर दी हैं। ये बहुत ज़्यादा अलग वर्जन है और इसको आप लोग गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करोगे तो मुझे बताना। और आपको ये यूज़ करने से आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना। और इस विंडो को रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी फ्री कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिस्प्ले स्पेस में तो ये यूज़ करिए तो आप इसको फ्री कर सकते हो। कंप्रेस्ड हार्ड ड्राइव की इसमें कमांड आ जाती है, वो भी एडेड है। So our Tiny 11 is totally ready, and this is the home interface. If you want to free more disk space, then press Y. If you want continue with this, press N. I am continue with this, press N, enter. Okay. Its total disk space is only 10 GB. Task manager. Okay, this is almost using 1.2 GB of RAM. And check its settings. Windows updates is ready. If you want to update this window, check for updates now. Okay. And this is also added a new tab option. This is latest Tiny 11. Okay. 22H2. Okay, check this. 22H2 latest. This is okay. This is also added some themes. Only two themes, dark and light. This is dark. Okay. Now this is dark mode. Okay, thanks for watching. If you like this window, please any help, if you need any help, ask me in the comments. Thanks for watching, guys. Love you all.